Dear students, today I am going to continue chapter 7 of OCM, standard 11 commerce, session number 11, public sector, private sector and global enterprise. Whatever the discussion was completed in last 10 sessions, right, that was only related to public sector. Also last 2 sessions which was covered under this particular point, it is for the comparison between the three nature, the types of the public sector, and last one, that is the changes which were made in the public sector due to the new scenario. Okay, so that was the discussion related to the public sector. Now going towards the next and the second type of the sector, that is the private sector. Right? I told you at that time, private sector is the oldest sector of the economy. The reasons are there, different reasons are there, and why the need arises of the public sector, that is also here. So let's start with the private sector. The name suggests it is of the individuals, it is of the different of the people from the private group. So private sector is a common thing, once again, oldest form of an economy, world economy we can say also, and also our country's Indian economy, it is the oldest form. Different type of business activities related with trade and commerce itself started to private sector. So whatever which are the different activities were there, or still today, which are the particular activities that are through the private sector. So it was started, it was established because of the private sector. That's why it is the oldest sector of the economy. In the olden time period, that is ancient time period, and then after, the business activities, that is different things, were managed by this or private sector. So by this sector it was managed. So different type of the business related activities which was at that time, in the olden time period, in the olden age, right, we can say that is the time period of the beginning of the some era. At that time period, the management or the work of the business activity, it was only from the private sector. So here the information is there, because of the private sector, others or other work is there. Private sector, that is the why, or that's why it is the oldest sector. So public sector, we already discussed, right? Public sector which came into existence due to certain limitations of the private sector, and also due to certain special requirements of the time. So simple information is there why the private sector was started, what was the main objective to start the private sector, that is the thing, right? It was the oldest, the objective simple, to earn money, to earn profit. But public sector came into existence because of the limitations of the private sector, and we already discussed in the public sector the limitation that is there in the private sector, the lack of less capital, lack of money. They are at that time not able to invest more and more capital in the different sector. That is why government started the private sector, government started the public sector, and the private sector was not able to give the services in the initial stage or initial time period of our independence time. So the reason is that उनके पास पैसा नहीं था और गवर्नमेंट को ऐसी सर्विस देनी थी at a lower rates, right? Because in that particular time period, earning money that was not goal, to provide better services that was the goal. So private sector तो आपको मालूम है, earn money, more and more profits. तो उनका काम अमाने का है, प्रॉफिट अर्न करने का ज़्यादा से ज़्यादा. सो वो पॉसिबल नहीं था कि वो इन्वेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, और उनके पास उतने पैसे भी नहीं थे प्राइवेट सेक्टर के पास. दैट वाज द टाइम पीरियड सो पब्लिक सेक्टर वाज स्टार्टेड. तो यहाँ तक आपको ये तो मालूम हो गया होगा प्राइवेट सेक्टर का जो भी इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इम्पोर्टेंस था, है और रहेगा. सो लेट अस डिस्कस सम अदर पॉइंट्स. इवन टुडे आज भी प्राइवेट सेक्टर इज इम्पोर्टेंट टू आवर नेशन, आवर कंट्री, होल कंट्री. अभी भी उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. उसका जो भी वर्क है वो भी बहुत जरूरी है कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री के लिए. लुकिंग आफ्टर द डिस्कशन, प्राइवेट सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन इकोनॉमिकल वे टू अर्न मनी. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेंथ आप सीख गए हो, और ऑल्सो इन अवर particular 11 also some of the points are related to the economic development. So the economic development of any nation is mainly due to private sector. जो भी development होता है country में, not only the public sector, the main role is of private sector.
because their work is important, because they are providing better services, prices are high, and providing better and better services with the different type of the facilities, and also they are giving and paying the taxes to the government in high level. That is the reason. Public sector का काम क्या है? To provide better services, but the rates are very lower. So that's why sometimes they are not able to provide the services in a proper way. कई बार ऐसा होता है कि they are not able to provide service in that way, which way is required in the particular country by the people, by the society, that is the population. तो उसी वजह से प्राइवेट सेक्टर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और वैसे भी बोल सकते प्राइवेट सेक्टर बहुत पुराना है, तो उसका एस्टेब्लिश पहले ही हुआ है, लेकिन वो उस टाइम में लिमिटेशन के तौर पर वो पब्लिक सेक्टर को यानी गवर्नमेंट को पैसे नहीं दे सके। दैट इज द पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव, दैट इज द पब्लिक सेक्टर वाज स्टार्टेड एंड एस्टैब्लिश्ड, राइट? सो हियर ऑलरेडी द इंफॉर्मेशन इज देयर इन अ हाईलाइट एंड रेड, दैट इज द थिंग। सी alliance share of national of our country of India's national income comes from private sector. alliance share बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट सेक्टर का हमारी कंट्री के नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आवक जिसको बोलते हैं, जिस पूरी देश का जीडीपी डिसाइड होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको मार्केट प्राइस से बेचते हैं तो हमें मिलता है नेशनल इनकम, राइट? नेशनल इनकम आपको मालूम है कैसे निकलता है, वो भी उसके लिए भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे हम। इकोनॉमिक्स में हमारा एक सेपरेट चैप्टर भी है, उसमें हम देखेंगे, लेकिन अब तक ये ध्यान पर रखो कि कंपनी जो भी प्रॉफिट करती है वो उनकी अकेले की कंपनी की कोई भी इनकम नहीं होती है, उसका कई हिस्सा सम ऑफ द परसेंटेज की होती है गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ टैक्सेस, राइट? तो नेशनल इनकम उसके हिसाब से डिसाइड होती है मार्केट प्राइसेस ऑफ द होल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। पूरे साल में जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको मार्केट प्राइस से हम जब डिसाइड करते हैं तब नेशनल इनकम डिसाइड होता है। उसका थोड़ा थियरी होगी कि इकोनॉमिक्स में, लेकिन अपना ये ध्यान रखो नेशनल इनकम में प्राइवेट सेक्टर का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो लायंस शेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। द existence of private sector is for ages, बहुत सालों से ages से चल रहा है, right? Also time and circumstances bring changes in private sector. नए प्राइवेट सेक्टर के नए अलग अलग प्रकार के फॉर्म आए, राइट? हमने वो भी OCM में यहाँ इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देख चुके हैं ना। तो एज पर द टाइम, एज पर द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेस चेंजेस वर मेड एंड चेंजेस आल्सो इज देयर और मे बी इट विल बी देयर इन फ्यूचर, सम ऑफ द चेंजेस एज पर द टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। तो समय के आधारित पर कई बार फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से उसमें चेंजेस होते हैं। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड पॉजिटिव अप्रोच फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आल्सो कंटिन्यूअस स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी देती है, उनको लोन्स भी प्रोवाइड करती है, एंड उनको स्पेशलाइज लैंड भी प्रोवाइड करती है फॉर दी डिफरेंट टाइप ऑफ दी आउटपुट, यानी उनको शायद कोई अपना शेड बनाना हो, राइट? उनको कोई फैक्ट्री बनानी हो, वॉटेवर, उसके लिए देती है, राइट? तो पॉजिटिव अप्रोच है बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में से अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देता है। सो दैट इज द थिंग ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट मीनिंग रिलेटेड टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या है? व्हेन अ बिजनेस, कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस हो, इज मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल। आपको मालूम है व्हेन वी स्टार्टेड द सोल प्रोप्राइटरशिप, इट इज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ वन पर्सन, रन बाय वन पर्सन, प्रॉफिट और लॉस व्हिच इज हैंडल्ड, दैट मींस द प्रॉफिट इज पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर और अ बिजनेस। So it is owned by the person, or maybe the loss is there, that is one, or whatever the losses related problems are there, it is handled by that person. So proprietorship में हमने देखा है। सो बिजनेस जो मैनेज होता है वो भी एक ही आदमी करता है, लेकिन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ग्रुप में आएगा, कंपनी है तो उससे भी ज़्यादा। सो व्हेन अ बिजनेस इज मैनेज बाय इंडिविजुअल, और ये ध्यान में रखना, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ profit, it is known as private sector. तो हमारी एक इंफॉर्मेशन जो आपके लिए है, यानी कि मोस्टली जब ऐसा होता है कि सर एवरी टाइम the profit is at the center, so that means all the sectors are private sector. Yes, all the sectors are private sector because all the sectors are there, they are started, they are established, or initiation was there, or we can say it was the starting point because of the profit.
जब वो शुरू हुआ, जब उसको शुरू किया गया, कोई एक टारगेट था, दैट इज द प्रॉफिट। सो वी कैन से व्हेन अ बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड बाय द इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन, कोई एक बंदा, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन और या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। Individual ownership, that is you can say sole proprietorship. PF, that is the partnership form. FUF, Hindu undivided family India and Nepal. Cooperative society, part of the service sector, and joint stock companies, that is 1956, and now 2013 are the parts, all the parts of the private sector. Right? So these are some examples of the private sector. Most of the forms of business organization are coming under the private sector, because private sector is the once again oldest, that is the first characteristics, oldest form. So private sector is the oldest form. It is repetitive. So it is the oldest form of business units, and the existence of business started. So उसका जो existence है, it was started or business was started with private sector. कोई भी बिजनेस होगा, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कंपनी दैट इज पब्लिक कंपनी, आपको मालूम है, गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी कंपनी पहले वो प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से ही शुरू हुई होगी। सो एक्सिस्टेंस विद द प्राइवेट सेक्टर, एंड इवन टुडे प्राइवेट सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो वो बहुत जरूरी पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है इकोनॉमी के लिए। तो उसके हिसाब से connecting the point with this one, it is our country's national income rated point, so it is giving or it will give the lion's share in the national income. Let us take second one, a big sharing economy. ये भी थोड़ा बहुत important point है। Private sector occupies or it will occupy in future also or still in our country's total income or economy. Private sector occupies important place of countries or our economy. उसका प्लेस बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको रखना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ द इनकम प्रोवाइडिंग सेक्टर। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन इकोनॉमी विदाउट प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में मतलब शायद कोई भी इकोनॉमी इमेजिनेशन में नहीं आती, उसको हम नहीं ले सकते। सो दैट इज विदाउट प्राइवेट सेक्टर नॉट पॉसिबल। एनी इकोनॉमी, नॉट ओनली इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, without private sector not possible. Most of the time you have knowledge regarding that. Most of the time the private sector is, now you are the students of the commerce, so you have knowledge regarding that what is public and private sector. Today you will get the exact idea about the public and private sector. ग्लोबल कौन साइड में रखते हैं, अभी पब्लिक का प्राइवेट का आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप सोचना कि व्हाट इज द रोल ऑफ बोथ, व्हाट इज द रोल इन द नेशनल इनकम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। आपको जो भी फैसिलिटी मिलती है कहाँ से मिलती है, वट एवर द फैसिलिटी आर टेकिंग फ्रॉम दी डिफरेंट टाइप ऑफ दी एंटरप्राइजेस दैट आर फ्रॉम द प्राइवेट और पब्लिक, लुकिंग अप एट दैट। थर्ड, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो भी जरूरत होगी उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस होंगे। दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर इज मोर फ्लेक्सिबल देन द पब्लिक सेक्टर। आप कभी भी उसमें चेंज कर सकते हो। लेट अस से प्राइवेट सेक्टर since its inception, जब उसकी शुरुआत होगी, एस्टैब्लिशमेंट होगा, दैट इज अ इंसेप्शन, राइट। तो इट हैज बीन ओपन टू चेंजेस। जब शुरुआत होगी तब से लेकर जब तक उसका काम चल रहा है तब तक वो ओपन है, राइट। उसमें कोई भी चेंजेस हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड circumstances. ये क्वेश्चन याद रखना, when you will make the changes or it is available for the changes whenever the time needed, whenever it is required, or as per the circumstances, whenever the different circumstances are not in favor, you can change the particular thing as per the your demand, as per the your need, right? So that is the changes according to the requirement. So here some of the points are remain under the characteristics. We will discuss in the next session, and then after I will start the point of the global enterprise. Before that one, there must be one point which should be keep in mind, that is difference between public and private sector. At that time you will understand what is the basic difference between them, right? एक तो है आपके सामने प्रॉफिट, दूसरा सर्विस, on the basis of some work also. Okay, thank you.